बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश 8, वेलकम टू द क्लास। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हमारा लेसन है माई क्लासरूम के ऊपर। आपका फेवरेट टॉपिक है और बहुत आसान है। इवन अगर आप अपने क्लासरूम पे भी लिखेंगे तो फिर भी आप ये ऐसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए फिर भी मैं इसको रीडिंग कर दूँगा। देखें, इट इज़ माई क्लासरूम, इट इज़ अ रूम ऑफ क्लास 8C. There are 27 rooms in my school. My classroom is the best of all. It is beside the headmaster's office. It is 25 feet long and 20 feet wide. It has 2 doors, 4 windows and 4 ventilators. There are 30 dual desks in it. We sit on desks. There is a chair and table for the teacher. There is a blackboard. The teacher writes on it. There are 6 ceiling fans and 2 tube lights in it. There is a duster to clean the blackboard. There is a cupboard. We keep the duster, box of chalks, register and other things in it. My classroom is very beautiful. It is decorated with charts and pictures. It is well airy and lighted. We keep our classrooms neat and clean. It is a good room. I love to sit and read in it. बेटा छोटा सा है, आपने याद ज़रूर करना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बेटा, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।